Hello, hi, and welcome everyone. We are going to discuss today one more important part of the condensed matter physics, as we were discussing the condensed matter physics for last few days for the CSIR NET and GATE exam. So welcome to my channel, and now we are switching to the discussion directly without wasting the time. So, our today's discussion, the important discussion of this part is the BCS theory. So, all of you might have studied this part in your MS topic in condensed matter physics, the BCS theory. And this theory is named after its inventors, Bardeen, Cooper, and Schiffer. This is the full form of BCS. So, BCS is actually the acronym of the names of three of its inventors, Bardeen, Cooper, and Schiffer. So, what are the physical advantages of this theory? Why this theory has been, you know, evolved as the important theory? What are its special significances that others' theory could not give? So it can discuss or describe the zero electrical resistivity, the origin of zero electrical resistivity, the Meissner effect, the theoretical implication of Meissner effect, or it can discuss the cause of Meissner effect, isotope effect, and presence of energy gap in superconductors. Why the energy gap is present in superconductors? What is the root cause behind it, is being discussed by BCS theory. सो BCS थ्योरी के बारे में जानने के लिए पहले BCS थ्योरी कहाँ से आया है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. BCS थ्योरी की नाम जो है वो एक्चुअली बार्डेन, कूफर एंड शिफर, जो BCS थ्योरी का इन्वेंटर्स था, जो जिन्होंने इसको पहले लाया था, इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, उनके नाम पर ये BCS थ्योरी की एक्रोनिम किया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म किया गया है. बार्डेन, कूफर एंड शिफर, उनका नाम की, उन तीनों की नाम की पहले जो लेटर है BC&S, इसको लेकर BCS थ्योरी की नामकरण हुआ था. इसका खासियत क्या है, इसका इम्पोर्टेंट जो जानकारी इससे मिलते हैं वो क्या है, इससे ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्यों आते हैं, ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की वजह क्या है, वो BCS थ्योरी से पता चलता है. मेसनर इफेक्ट की जानकारी इससे मिलते हैं. आइसोटोप इफेक्ट की जो रूट कॉज, जो इसका वजह है, वो भी BCS थ्योरी से ही निकल के आते हैं. प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गैप इन द सुपर कंडक्टर में क्यों एनर्जी गैप रहते हैं, उसका कारण भी BCS थ्योरी से ही मिलते हैं. ये इतना है BCS थ्योरी की जो इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस एंड उसका नामकरण की जो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है वो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट डज BCS थ्योरी एक्चुअली रिप्रेजेंट and what is electron-electron interaction via lattice deformation, how the electron-electron interaction via lattice deformation can be signified or can be defined from BCS theory. So as it is stated, when electron interacts with a lattice, then it transfers a virtual phonon to the lattice. Again, if another electron interacts with the lattice, then the lattice shares the phonon with the electron. That means actually when electron passes around the lattice, the specific lattice shape, then the specific lattice shape actually interacts with the electron by sharing or by transforming the phonon. Okay, phonon is the, what can I say, the communication medium between the lattice and the electron. So they actually shares the phonon in between them. The next part is, if again one more electron, after the interaction of the first electron, if the second electron comes and interact with the lattice, then the lattice shares the residual phonon that has been shared by the electron earlier, and that's how the two electrons gets paired by the virtue of the lattice. So the BCS theory actually represents, or BCS theory defines this phenomenon of getting paired of two electron by the virtue of one lattice deformation. So this is the
important significance of BCS theory. In this way, electron gets paired if the Coulombic repulsion becomes lesser than the phonon energy. So we know that two electrons having the same charge would get repulsed by each other, because according to the Coulombic force that we have learned earlier in our basic physics, the same electron of same charge would in between the same electrons of same charge there will be a repulsing force. But in this case, the Coulombic force is lesser than that of the lattice phonon energy. The phonon that has been shared by the lattice and the electron, uh, that energy was more than the Coulombic repulsion. So that's why the here the electrons could get paired between them. Okay. The third one is magnetically parallel spins repels each other and antiparallel spins attract each other. So magnetically parallel spins repels each other. According to BCS theory, the magnetically parallel spins repels each other and antiparallel spins attract each other. So this what can I say statement we could get from also the Pauli's exclusion principle. So we are getting its justification here in BCS theory. So BCS theory कौन सी चीज़ों को लेकर वो डिस्क्राइब करती है, यहाँ पे हम देख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक BCS थ्योरी में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सॉलिड में, वो अगर किसी लैटिस स्ट्रक्चर के पास से गुजर के जाते हैं तो उसके साथ लैटिस का एक इंटरेक्शन होती है, लैटिस का एक कम्युनिकेशन होती है फोनोन की थ्रू, फोनोन के माध्यम से उन दोनों के बीच, लैटिस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच एक कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होती है. सो इस इंटरेक्शन के बावजूद इस इंटरेक्शन के कारण में इस इंटरेक्शन के लिए एक फोनोन शेयर होती है इलेक्ट्रॉन और लैटिस में. बाद में अगर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन उस लैटिस के साथ इंटरेक्शन में आए, इंटरेक्शन मतलब वहाँ पे एक इंटरेक्शन तैयार करे, तो वहाँ पे जो फोनोन पहले जो इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया था लैटिस के साथ, वही इलेक्ट्रॉन वही फोनोन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी लैटिस शेयर करेगा. तो यहाँ पे हम कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स की, कूलम्बिक फोर्स की जो जानकारी था कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होंगे, यहाँ पे फोनोन एनर्जी अगर ज़्यादा हो तो सॉलिड में फोनोन एनर्जी अगर ज़्यादा हो तो कूलम्बिक रिपल्शन अगर फोनोन एनर्जी से छोटा हो तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक पेयर बन जा सकते हैं, जो BCS थ्योरी का इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है, BCS थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है. तीसरा जो बात यहाँ से निकाल के आते हैं BCS थ्योरी से, वो है मैग्नेटिकली पैरेलल स्पिन. अगर दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल हो तो वो उन दोनों में रिपल्शन होंगे, और दोनों का अगर स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन पर हो तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन में एक अट्रैक्शन बनेगा. तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से भी इसका जानकारी मिलते हैं. तो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का जो जस्टिफिकेशन है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की जो सपोर्ट है, वो BCS थ्योरी से भी मिलते हैं, BCS थ्योरी से भी निकल के आते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू see what does Cooper pair mean and what are the properties of Cooper pair. Now the pair of the electrons via lattice is known as Cooper pair. The pair between the electrons that had been formed by the virtue of lattice deformation is known as the Cooper pair. The pairing of the two electrons by the virtue of the lattice deformation that we just have learned from the earlier slide is known as Cooper pair. Now this pair is spin 0 boson. This pair is known as boson and its spin is 0. Its charge is -2, since two electrons are getting paired in the Cooper pair. So if we take the charge of each electron is -e, so the
charge of Cooper pair would be -2e. Size of next binding energy is 1 mega electron volt MeV1 MeV. This energy lies in microwave region and hence superconductor absorbs MW radiation, microwave radiation. So this energy lies in the microwave region and hence superconductor absorbs microwave radiation. So these are the few what can I say significances or properties you can say of BCS theory or of Cooper pair uh, mainly. In next slide, we are going to talk about coherence length. What does coherence length mean? Cooper pair keep their correlation with a certain length called the Cooper length, and that Cooper length is defined by the mathematical formulation xi equal to 2 a squared v suffix f by pi e suffix g. So here v suffix f is the velocity of the electron and e suffix g is the energy gap. So what does coherence length mean? So Cooper pair keep their correlation. So Cooper pair means the pair of the electrons. So they keep their correlation. They keep their pair in a certain or within a certain length, and that length is known as Cooper length. There it is not that the electron the distance between the electrons can be anything, and they will be get paired. They will be getting paired by the virtue of lattice deformation. There is a condition that a certain length, if the electron comes in a certain length near the lattice, then by the virtue of lattice deformation the correlation or the pairing can be happened. So that particular length is known as the coherence length. So coherence length की मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन कई डिस्टेंस पे रह सकते हैं और उनके बीच एक पेयरिंग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर, एक सर्टेन डिस्टेंस में दो इलेक्ट्रॉन अगर लैटिस के सामने आए तब लैटिस डिफॉर्मेशन की वजह से, लैटिस डिफॉर्मेशन के ज़रिए उन दोनों के बीच, उन दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक पेयर बनेगा। तो वही जो लेंथ है, जिस लेंथ में वो पेयर बन सकते हैं, उसको कोहेरेंस लेंथ माना जाता है। तो ये है कोहेरेंस लेंथ की डेफिनेशन एंड कोहेरेंस लेंथ की सिग्निफिकेंस। तो बीसीएस थ्योरी में इतना ही थ्योरी है। बीसीएस थ्योरी का जो सेंट्रल पार्ट है, जो न्यूक्लियर थीम है बीसीएस थ्योरी का, वो इतना ही है। कोहेरेंस लेंथ, बीसीएस थ्योरी का सिग्निफिकेंस और बीसीएस थ्योरी में कूपर पेयर क्या है और कूपर पेयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड पहले से वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड just keep sharing the video and like the video and just drop your valuable comments for the further rectifications. Thank you.